students. Today we are back with our new session of class 2nd, chapter number 6 about food for health. So today students, we are going to discuss or explore the very interesting topic and the necessity of our life also. That is food. So as we all know that food is mandatory or needed by all of the living things. Okay, why? Because food gives you energy, food helps us to grow healthy and also makes our body strong. Okay, so आज हम डिस्कस करने वाले हैं फूड की इम्पोर्टेंस को इन अवर लाइफ. See students, first of all they have given an activity. Okay, what do you have to do? Some food items are given here. Pick the food items that you would like to have in your plate while having lunch. Okay, so students, there are some food items and in food items में से आपको उन food items पे pick करना है जो आप अपने lunch के दौरान लेना पसंद करेंगे. Okay, so there are some food items which are not good for our health. Like you can see, this is sandwich, not good for our health. This is noodles, not good for our health. This is pizza, not good for our health. Rest, if we talk about, this is almonds, apple, okay. This is carrot, eggs and milk. All these are good for our health. So we can include them in our diet. Okay. Now, see, all living things need food, air and water. Food is an essential part of our life. We move, work, play, think and learn only due to the energy that our food gives us. So student, what they're saying कि सभी living things को food, air and water की requirement है survive करने के लिए. Food हमारी life का एक important part है. आप जो move करते हो, you work, you play, you think, you learn. इस सभी different activities को जो हम regular basis पे perform कर पाते हैं, उन सभी के लिए energy is required. And वो energy हमें food से ही मिलती है. The need for food. So हमें food की requirement है mainly for 4 reasons. Number 1, it gives us energy. Well, food हमें energy provide करता है. It makes us healthy and strong. Food हमें healthy and strong बनाता है. It helps us to grow. Food हमारी body को grow करने में helpful है. And food protect us from diseases. And उसके साथ साथ food हमें काफी सारी बीमारियों से, diseases से protect करता है. So all these 4 are the main reasons that why do we need food. Okay. See, the next topic which we have is meals. See, meal is a food eaten at one time. Generally, we have 3 meals in a day, namely breakfast, lunch and dinner. What they saying कि meal क्या है students? एक particular time पे आप जो भी खाना खाते हो उसे meal कहा जाता है. And एक day के अंदर generally हम 3 meals लेते हैं, that is breakfast, lunch and dinner. तो breakfast हमारे day की सबसे पहली meal होती है which we eat in the morning time, right? Then we have lunch, that is the second meal and उसको हम afternoon में usually लेते हैं. And third is dinner, that is the last meal of the day which we eat at night. Okay? Now, some people eat vegetarian food, that is a food item that we get from the plants, such as vegetables and fruits. So student, what they're saying कि कुछ लोग केवल vegetarian food items खाते हैं. Vegetarian food items वो food items है जो हमें केवल और केवल प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि vegetables, fruits, all these are vegetarian food items. But many other people, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें non-vegetarian food items पसंद है. Now, what are non-vegetarian food items? The food items that we get from animals. वो सभी food items जो हमें animals से मिलते हैं, they are known as non-vegetarian foods, like meat and eggs. Okay, so इस तरीके से some like to eat vegetarian food items and there are some people who likes to eat non-vegetarian food items also. Okay, now different kinds of food. So we need different kinds of food in our diet every day. Okay, तो हमें हर रोज अपनी डाइट में different kinds of food की requirement होती है because different types of food item help us in different ways. How? Some food items give us energy to work. कुछ ऐसे food items हैं जो हमें energy provide करते हैं to work, to play. Some food item help us to grow or fight diseases. And कुछ ऐसे food items हैं जो हमारी body की growth में helpful हैं and इसके अलावा हमारी body के immune system को strong बनाते हैं so that we can fight against the diseases. Okay?
Now, first of all, we have energy giving food. So, as the name suggests, energy giving food. That means what? वो सभी food items जो आपको energy provide करते हैं, they all will be considered as energy giving food. Example: sugar, potato, rice, oil, ghee, butter, cheese. Okay, so ये सभी वो food items हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू वर्क एंड टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज ड्यूरिंग योर डे. ओके, so all these food items are called energy giving food. Secondly, we have bodybuilding foods. So bodybuilding foods are those foods or the food items which helps your body to grow. तो सभी फूड आइटम्स जो आपकी बॉडी की ग्रोथ में हेल्पफुल हैं, जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. एग्जाम्पल: peas, beans, fish, eggs, milk, they help us to grow. And therefore, they are called body building food. These helps in building our bones and muscles. ये आपकी बॉडी की जो bones हैं, जो muscles हैं, उनको build up करने में, उनको strong बनाने में. Then next we have protective food. Protective food means what? The food which protects your body against diseases. तो सारे फूड आइटम्स जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, आपको हेल्दी रखते हैं, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं सो दैट आप किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सके, दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक. ये आपको बीमार पड़ने से बचाते हैं एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिजीजेस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. ओके, example: cereal, milk, green, leafy vegetables, and fruits are protective food items. Now, have you eaten a salad? Obviously, we all eat salad, right? Are the vegetables in it cooked or raw? Salad में जो vegetables होती है वो cooked होती हैं या raw? So they are raw, right? See, there are some vegetables like cucumber, radish, carrot, tomato. ये सभी ऐसी vegetables हैं which can be eaten raw. यानी कि इनको कच्चा हम खा सकते हैं. Without cooking, we can eat them. But the vegetables and fruits must be washed properly before we eat them. लेकिन ये सारे fruits and vegetables को खाने से पहले हमें properly wash करना चाहिए. Because एक proper washing के बाद वो dust free and germs free हो जाती है. Okay? A good breed of cow gives about 90 glasses of milk per day. Very important कि एक अच्छी breed of cow जो होती है वो around 90 glass of milk per day provide करती है. Then we have drinking water. So along with the food, water is also required for the normal activities of your body. आपकी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए पानी की भी जरूरत होती है, इसलिए हम सभी को 6 to 8 glasses of fresh and clean water every day drink करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वी हैव हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. अब अच्छी ईटिंग हैबिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So besides clean water and healthy food, we also need clean surroundings, fresh air, and enough sunlight to stay healthy. So other good habits are as follow. What they're saying, एक clean water and healthy food के अलावा students हमारी जो surroundings हैं वो भी clean होनी चाहिए, fresh air हमें मिलनी चाहिए, enough amount of sunlight we should get to stay healthy and strong. So यहाँ पे कुछ आपको good habits given है. Like number 1, we must have our meals at fixed hours every day. हमें हर रोज अपने एक फिक्स टाइम पीरियड बाद फिक्स आवर्स में अपनी सारी मील्स को प्रॉपरली लेना चाहिए. सेकेंडली, नेवर स्किप एनी मील. किसी भी मील को हमें स्किप नहीं करना है. वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. हर एक मील को लेने से पहले, मील को लेने के बाद आपको अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए. नेवर ईट फूड इन अ हरी, ची योर फूड वेल. कभी भी आप जल्दबाजी में अपने खाने को नहीं खाएंगे. प्रॉपरली धीरे धीरे आपको अपने फूड को च्यू करना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, अवॉइड ईटिंग जंक फूड. जंक फूड आपको अवॉइड करना है. स्वीट साइड फूड आपको अवॉइड करना चाहिए. ओपन फूड आपको नहीं खाना चाहिए जो कवर्ड ना हो, अनकवर्ड फूड. Then we must not eat uncovered food sold by hawkers. As I told you, जो आपके street hawkers हैं, uncovered food items को sell करते हैं, you should not eat them. We must eat enough of seasonal fruits and vegetables. जितने भी seasonal fruits and vegetables हैं, उन्हें आपको एक अच्छी quantity में लेना चाहिए. We should not speak when we have food in our mouth. जब हमारे mouth पे food होता है, खाना होता है, जब आप खाना खा रहे हैं, उस टाइम पे आपको बोलना नहीं चाहिए. शांति से खाना अपना प्रॉपरली खाना चाहिए. And we must not waste food. Very important. हमें food को कभी भी waste नहीं करना चाहिए. Okay?
take that much amount only in your plate as enough for your diet. जितना आप खा सके उतना ही आप खाना अपनी प्लेट में लेंगे and इसको finish करेंगे. ठीक है? So students, that's all for the chapter. We have discussed many good habits which we all should follow to keep our body healthy and strong. Okay, so let's meet in the next session. We will start with some new exciting topic of science. Till then, keep doing well and thanks to everyone.